Om Shri Sai Ram. Sai Ram to one and all. Today, for today's session of Blissful Experiences with Sai, we have a very rare and very close to Swami, a devotee from Ludhiana, Mr. Navdeep Sharma. He was a chosen youth leader by Swami and the one who led many youth conventions throughout the country. The first convention was in 1996, and there used to be a personal involvement of Swami in everything they used to do. And he used to have an interview session with all of them after every Gram Seva or youth convention they used to accomplish and come back. Being a part of Bombay group, which was initiated and guided by Swami Bhagwan himself, he was an instrumental in doing youth convention in Punjab and especially taking organization into villages doing Gram Sevas in early 2000, along with Dr. K.K. Arora, Mr. Atul Soni, Mr. Sanjay Sondhi, and our state president, Mr. Maninder Singh ji. Navdeep Sharma has excelled in his professional career as well as a marketing leader and a young boy from Ludhiana whom Swami took to many places and made him an instrument in his mission. Let us all learn from his experiences, and I request Mr. Navdeep Sharma to please take over and share the beautiful moments he has lived with Swami and make us remind and make us experience all the Swami's words and Swami's instructions they used to have. And with these words, I'll request Mr. Navdeep Sharma to please take over. Om Shri Sai Ram. I'm thankful to all of you for inviting me for this lovely meeting today evening, wherein I have been asked by Osho to share my experiences with Bhagwan Shri Satya Sai Baba. So today's meeting itself is a very big experience. Thank you, Osho, and thank you, Swami. When Osho invited me last night for this meeting, I told Osho that I'll speak whatever I've experienced. And thanks to Osho, he has sent this message to Bangalore, to many other Sai devotees, and I'm lucky and thankful that the group leader of Bombay Youth, Shri Rajeshwar Singh Amar, has also joined this meeting. Rajesh Bhaiya, can you hear me? Sai Ram, yes, I can hear you, Navdeep. Carry on, beta. So this is called God's will. I wanted to keep this meeting secret. I never wanted to speak about this meeting to anyone. But it was God's plan to have Rajeshwar Singh Amar in this meeting. He never got invite through me. He got it through my brother, who in turn had got invite from Osho. As a result, just 3 minutes before meeting, I was forced to send the meeting invite even in the Bombay Youth Group. So this is my latest experience with Swami. So when we talk about Swami, although my journey with Swami started as a Balvika student, wherein on every Sunday I used to go with my elder sister and attend Balvika's classes in Mumbai in BARC. I had privilege of being student of Sri Suresh Rao, who was a scientist in BARC. I could learn shlokas from him. I could learn values from him only by God's will. And I was lucky enough to be chosen by Swami to do youth conventions across India. And as I said, it's God's grace that our group leader is here. He's also from Punjab. His name is Rajeshwar Singh Amar. And he had very beautiful wife called Uma Didi, a Keralite. Their marriage was performed by Swami. So Swami asked Uma Didi that the time has come when the youth has to impress youth. एक नौजवान को दूसरे नौजवान को impress करना.
I was in my final year of college, and I met Rajeshwar Singh Amar Bhaiya for the first time in Dharmakshetra in Mumbai. And they were told by Swami that whom Swami will, they will automatically meet Uma Didi and Rajeshwar Singh Amar Bhaiya. As a result, by God's grace, I met Bhaiya. We have brother Sairam Raghavan, who's an amazing singer, amazing instrument player. He met Bhaiya. We have another singer friend called Sairam Iyer, whom you would have seen in ZTV, and he's a professional singer. We met him, and many boys came across. And on 14th and 15th of December 1996, we had our first youth convention. Dear sister and brother, let me tell you, my meeting with Rajeshwar Singh Amar was only a few seconds, a few minutes. And there's some disturbance. And our aim was to do youth conventions across country, to motivate youth, to inculcate human values, share Bhagwan's values with them, sing his glory in the form of bhajans, and guide them. So Swami said Sai is SAI, S for spiritual change, A for association change, and I for individual change. We had our first convention in Yavatmal district in Maharashtra, in Satyasai Sports College, which was run by Mr. Prakash Nandurkar. The first youth convention was attended by almost, say, 1,000 youth, and we took them to Puttaparthi. I'm sure all of you would have seen the prayer hall in Puttaparthi. Can I have interaction with all of you? I believe all of you have seen Puttaparthi prayer hall, जहां भजन होते हैं. Hello? Can I have some answers? Yes, sure. Carry on, Navdeep. We can hear you, please. Yeah, because जितना interactive session हो उतना ज़्यादा मजा आता है. So after the youth convention, when we went there, the first miracle was we got a train in which was directly from Yavatmal to Puttaparthi. The train was named as Pilgrimage Express. The entire train was full of youth that went from the Yavatmal area to Puttaparthi. तो पूरे रास्ते भजन होते हुए गया. It was a divine experience which we never experienced. Number two, when we went there, Swami had already informed people that my boys are coming and they are bringing many youth. And we were blessed to have an interview. The capacity of that prayer hall is around, say, 400 or 500 people on the maximum side. Believe me, sisters and brothers, we got interview of almost 90 minutes with Bhagwan, and all the 1,000 youth who traveled to Puttaparthi were accommodated there. So every time, whenever we used to do Gram Seva youth conventions, we were blessed to have divine Sambhashan, divine Darshan, and divine Prasadam. I really do not know from where the funds had flown. The Bhaiyas used to contribute for these Gram Sevas. And as you know, nothing moves without money. So when we used to question Swami, from where we'll get money, Swami used to make his ways that money used to flow. If I have to give it with example, I visited Punjab and I happened to meet Dr. K.K. Arora. I happened to meet Atul Soni Bhaiya. I happened to meet Maninder Singh Bhaiya. And let me tell you, in the early 2000s, 3-4 lakh rupees was a very big amount. And thanks to these Bhaiya for their large heart, and they did youth conventions not only in Ludhiana but across Punjab. We visited every college, we visited many villages doing service. So the moral is,
when Swami wills, all the resources get created automatically. So if we have to say, define Swami, you cannot explain Swami's experiences in words. You become actually speechless. And all I can say is, throughout, like in so many years, what I believe is, if you get a chance to serve Swami, you get chance to do seva, it is only his will. I remember we used to earn nothing, and we were doing seva, and our trips, our food, everything was being sponsored by elders. And that time we used to think कि थोड़े बड़े होंगे तो हम पैसे कमाएंगे, जब पैसे कमाएंगे तो ढेर सारी सेवा करेंगे. Believe you me, sisters and brothers, God proved that you cannot do seva when you have money in your pocket. To do God's seva, you need God's will. So we happened to do youth convention and Gram Seva for almost 6 years. We traveled from Kashmir to Kalundi in Kerala, from Kutch, Gujarat, to Orissa. We were part of the Budni floods. वहां पे गोदावरी नदी है, बाढ़ आई हुई थी. हम जहां जाते थे स्वामी के भजन गाते थे. किसी को तैरना नहीं आता था, बट थैंक्स टू स्वामी मन में इतना विश्वास था कि उस बाढ़ में जब हम बोट पे जाते थे अनाज लेके या दवाइयां लेके, किसी के मन में बिल्कुल भी भय नहीं होता था. When we went to Orissa, there was cyclone. We worked with Army and Air Force for almost 2 months. और हम रोज 10,000 लोगों का खाना बनाते थे. ट्रस्ट मी, पूरा दिन काम करने के बाद जरा भी थकान नहीं होती थी. When we were in Punjab doing youth convention and Gram Seva, the day was 26th of January, और वो घर था मनिंदर सिंह भैया का. अचानक अर्थक्वेक आया एंड सब कुछ हिल गया. We switched on the TV after some time, तो पता चला भुज में अर्थक्वेक आया. Thanks to Maninder Bhaiya, thanks to Atul Bhaiya, thanks to all the Bhaiyas that time, Dr. KK Arora, many names I won't remember. फटाफट 3, 4, 5, 6 ट्रक जितने थे इन्होंने सेवा के भरे, चाहे वो खाने के हो, चाहे बर्तन के हो, चाहे कंबल के हो. And from Jalandhar we all moved to Bhuj and we worked with Army and Air Force. Those were really beautiful years, and I tell very proudly to people कि 60 दिन में शायद मैं 60 रात अपने घर में सोया था. यदि सामने मंदिर आता तो हम भजन गाते, यदि मस्जिद आता तो हम अल्लाह अल्लाह करो पुकार करते, यदि गुरुद्वारा आता तो हम वाहे गुरु जी बोलते. भुज में जब हम गए तो वहां पे कृष्ण के भक्त थे, तो हम बोलते थे जय योगेश्वर. और हर बार जब हम ग्राम सेवा, यूथ कन्वेंशन या नेचुरल डिजास्टर कैलामिटी का काम करके जाते, भगवान बड़े प्यार से हमसे बात करते और अपनी विभूति से या अपने जो डिवाइन क्रिएशन है उससे हमारा उत्साह बढ़ाते. And today only those days are only memories. And thanks to Osho, when yesterday he said कि भैया बात करो, I said it's difficult to speak about your experiences with Swami. आप बता तब पाते हो जब आप नए नए होते हो. But as you fall in more and more deep and deep love with Swami, you realize that you are nothing. I was doing far more seva when I had nothing in my pocket. Almost 30, 40 youth. Like Bombay, you know, Bombay में देश भर के लोग रहते हैं.
राजेश्वर सिंह अमर भैया का घर होता था बोरीवली में, और बिल्डिंग का नाम था वसुंधरा अपार्टमेंट। वसुंधरा पृथ्वी का नाम है। एंड सारे जो यूथ थे रात को भजन गाते थे, प्रैक्टिस करते थे, और दिन में अपने अपने काम करते थे। बड़े भैया लोग अपनी तनख्वाहें जमा करके दीदी को पकड़ाते थे, और जब पैसे जमा हो जाते थे तो हम सेवा के लिए निकलते थे। आई रिमेम्बर the way Swami used to acknowledge, दिन में खाता नहीं है, रात को सोता नहीं है, बहुत काम करता है। It's very difficult to speak about the experiences with Swami. What I've realized, जो हम शब्दों में कहते हैं, that oh God, please make us thy worthy instruments. So we are nothing but his instruments. It is he who makes us serve the needy. And let me tell you, जब हम सेवा करते हैं, हम किसी पे एहसान नहीं करते। हम सेवा करते हैं सिर्फ अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। And the more we do seva, we realize that we might be Punjabi, we might be Keralite, we might be from UK or US, but we are actually one. And you meet Satyasai devotee or any other devotee not by chance. You meet them by choice. So whenever we get chance to meet, we have to ensure that we utilize that moment for our own upliftment. Although I have been asked to speak about my experiences with Swami, I can tell you one dialogue which Swami said on 19th December 1996 when we had got the interview. I used to have many friends. Many means many friends. And that time I had done BSc chemistry. I wanted to do MBA. Suddenly Swami during the interview he said, "What is MBA?" I thought I was a smart guy and I was in the second or third row. So I said MBA is mind, body and Atma. I was feeling confident that Swami will be very happy. He may give me vibhuti. He may give me diamond ring. So Swami looked at me. He said, MBA means Master of Business Administration. Then he spoke a couple of lines what Master in Business Administration was. Then he looked at me and he was talking about friends. A beautiful line which Swami said, which I realized today is actually true. He took my right hand in his hand and he said, friend, I am your friend. And then my right hand was in his right hand and with his left hand on his chest, Swami patted like this and he said, I am your friend, God is your friend.
So when I recall these lines, he gave me the status what he gave to Arjuna, the Sakhya Bhav. We may have many worldly friends, but when we really need someone, when there is no one around to help us, the God alone helps you. I'll give you the latest example of 21st January. I think uh, apart from Rajeshwar Singh Amar, no one knows this. This year, 2021, I was traveling from Kanpur to Lucknow. And let me tell you, I was a bit demotivated that evening. As you know, our businesses are down. Life has changed. So when I started, I never knew where should I go. मैं कानपुर से लखनऊ वापस आऊं या लखनऊ से सीधा दिल्ली वापस आऊं, because I drive. I only commute by the car. So when we were getting out of Kanpur, I asked my driver, what is this? ये नदी कौन सी? He said, ये गंगा जी है. So I told गंगा जी, सारे दुख दूर करें आप. And I did Mahalakshmi Shatkam and we moved. Say midnight around 12:40, I suddenly found that I am being sandwiched, and I was sandwiched by two large trucks. I was in brand new top model of Tata Zest, a very strong car. Believe you me, brothers and sisters, the entire car got damaged. The four-seater became two-seater, and luckily the car stopped, and I called up my wife. I said, Monica, I'm alive. She said, what? I said, I have a small accident. Difficult to explain to three of you. I think Dr. K.K. Arora has seen it. Maybe Dr. Atul Bhaiya has seen it. On the unknown road, unknown people came for my rescue. They broke the car glass and they took me out. If I'll send you pictures, I think you all will say that, Navdeep, you are living miracle of God. My driver was shocked because the brand new car got finished. So when the police took me out of the car, they said, Navdeep, aap kaise ho? Maine kaha ji, main theek hu. And then say, what should we do? I said, kindly click my photo. I'll share these car pictures with Osho. I really do not know whether I've shared it with Osho also this. On 26 January 2021, God gave me a new life. The car got finished और उतनी ही जगह थी जो मेरे जीने के लिए पर्याप्त थी. Not even a single scratch. So like all of us who are present in this meeting, I'll say that even this meeting is planned by God. Probably Osho wanted me to speak about my experiences with Swami. But I think Swami's plan was that Navdeep should rethink how graceful Swami has been all throughout in so many years. So whenever we get chance to do seva, we have to thank him. And we should never miss any opportunity of serving him. So Osho, anything else you would like to know? Any question? It's very difficult to speak about
experiences of Swamis, because experience वो होता है जो अनुभव किया जाता है, जो बताया जाता है वो अनुभव का एकदम फ्रैक्शन होता है. साईराम भैया, आई एम फ्रॉम जलंधर, दीपशिखा. जब आप जलंधर आए थे उमा दीदी के ग्रुप के साथ, जब आपने यूथ कन्वेंशन करा था, Yeah. तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आप सबके साथ, एक न्यू एक्सपीरियंस. और हम सब आपको सुन रहे थे. एट दैट टाइम आई वाज स्टडीड इन +1 क्लास. इट वाज वेरी यूनिक एक्सपीरियंस. और एक वन टाइम पे ना, जब आप जलंधर में सुनील मल्होत्रा जी के, जो हमारे समिति के मेंबर्स हैं, तो उनके घर में ना भजन था नए साल का. तब आपने बहुत छोटी सी स्पीच दी थी और उसने मुझे बहुत बड़ी डायरेक्शन दी थी. मतलब जैसे हम सबको ऐसा था कि हमें भी स्वामी का स्टूडेंट होना चाहिए. स्वामी हम आपके स्टूडेंट क्यों नहीं है? आप सबको देख के बहुत ज्यादा मन में तभी गर्नस हो रहा था. एंड दैट टाइम आपने कहा था कि स्वामी को अपने स्टूडेंट्स में नंबर 2 कभी पसंद नहीं है, हर चीज में नंबर 1 होना है. आई थिंक तो आपको अगर रिमेम्बर हो तो आपने तब बोला था कि अगर हम स्टूडेंट है तो नंबर 1, डॉटर है तो नंबर 1, सन है तो नंबर 1. ईच I एंड remember और this. वही मेरी लाइफ का एक हाई मार्क्स बन गया था कि हमें भी ऐसा ही करना है, कि हम स्वामी को देखते हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्वामी हमें देखें ऑल टाइम. Agreed. I remember तो हमारी उसके कन्वेंशन लिए का एक मतलब टॉपिक होता था पर्पस ऑफ लाइफ. तो बड़े बड़े लोग कहते थे पर्पस ऑफ लाइफ इज मोक्ष, पर्पस ऑफ लाइफ इज दिस, पर्पस ऑफ लाइफ इज दैट. Whereas I believe the purpose of life is to be number one, the number one son, the number one father, the number one husband, number one wife, number one boyfriend, number one in every role that we play, number one neighbor, number one citizen of India. Yeah, Deepshikha. फिर वो बात खत्म हो गई कि हमने स्वामी का स्टूडेंट बनना है. मतलब ये हो गया कि हम जो हैं, हमने स्वामी की नजर में नंबर 1 बनना है बस. और वो भी हर चीज में नंबर 1 होते हुए. तो Yes. बहुत बहुत आपका, आज जब आपको सुनने, इतने सालों बाद आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छा फील आ रहा है. बहुत अच्छा. मतलब वो सारी मेमोरीज, उमा दीदी का ग्रुप, उनके साथ आप सबके साथ पुटपर्ती जाना, वहां पे हम रात भर बैठ के वो प्रैक्टिस करते थे सब सॉन्ग्स की. तब आप सबने हमें सिखाया था चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया. वो सॉन्ग इतना मतलब बढ़िया है. अगर भैया आपको आता है तो प्लीज वही थोड़ा सा गा दीजिए. बहुत अच्छा था. I'll अगर definitely आपको sing. ध्यान में है तो. हाँ मुझे सब जी. कुछ याद है. Thank you फर्क भैया. इतना है कि I become bit silent now because God makes sure, you know, the more you speak, the more He tests you. So अगर भगवान के टेस्ट से बचना है तो बड़ा ही तोल मोल के बोलना होता है. बट बिफोर आई सिंग दैट सॉन्ग, मैं एक भजन गाऊंगा जो मेरे दिल से निकलता है. ओके अभी जो भैया. कोविड आया है, जो स्वामी. I'll definitely sing for you, Deepshikha, that bhajan. Okay, that's my promise. But एक भजन है जो मैं अब दिल से गाता हूँ. And thank you for remembering those beautiful days. पिछले 2 साल से जो कोविड चल रहा है ना, इस कोविड ने बड़े बड़े का घमंड तोड़ दिया. किसी को घमंड था मैं ऑफिसर हूँ, किसी को था मैं अमीर हूँ, किसी को ये था मैं मिनिस्टर हूँ, किसी को था मैं पुलिस वाला हूँ. बट जब मुसीबत आती है तो कोई रुतबा नहीं देखती, कोई पोजीशन नहीं देखती. एंड इस क्राइसिस के सिचुएशन में हम सारे अपना आत्मा अवलोकन करते हैं, हम अपनी सेल्फ ऑडिट करते हैं. एंड वी ऑल स्टार्ट प्रेइंग टू द गॉड एंड वी से गॉड यू अलोन कैन सेव अस. तो ये भजन पहले भी हम गाते थे, बट उस समय मेरे को उतना भाव नहीं आता था. सो आई विल सिंग दिस भजन बिकॉज ये मैं रोज गाता हूँ. इनफैक्ट कल जब ओशो ने मुझे बात करने का, मैंने कहा ओशो मैं क्या बात करूं, यू गिविंग मी अ कॉल इटसेल्फ इज स्वामीज एक्सपीरियंस. भगवान के बिना हम सब जीरो हैं.
God alone is number one, and He alone makes us number one. He makes us feel that the day we feel that we are zero, He makes us hero. So we can close eyes and we can sing this bhajan. Okay? ओके भैया, This is my house. ये भी भगवान की देन है. Alright? मैं पंजाब में पंजाबी मीडियम में पढ़ा हूँ, बम्बई में हिंदी मीडियम में. अंग्रेजी मैंने बड़े बड़े भैया लोग से देख देख के सुनी है. And by God's grace, I've been lucky enough to be country head of a beautiful, say, at the national level. I've been VP of a European company. That's God's grace. But जैसे भगवान ने हर किसी का अभिमान तोड़ा है, अगर हमारे में अभिमान आया तो भगवान ने वो भी तोड़ा है. So I'll just sing this bhajan. हे मदनांतक दया करो, हे मदनांतक दया करो, गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा दयामया, गोपिका रंजन साई गोपाला, रघुकुल भूषण साई रामा, हे मदनांतक दया करो. तो बहुत ही प्यारी लाइन है, हे मदनांतक दया करो. So during these COVID times, I know so many people who have become jobless. There's so many people, their businesses have got finished. And they have realized कि हे भगवान दया करो. तो जिसने भी ये भजन लिखा है, I'm sure बहुत ही खूबसूरत पंक्ति हैं. And all of us, it suits our lives. ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसने भगवान से ये नहीं बोला हे भगवान अब कोरोना को खत्म कर दो आप, हे भगवान हमारे बिजनेसेस ठीक कर दो, हे भगवान हमारी लाइफ नॉर्मल कर दो. सॉरी गॉड. आई एम श्योर हर बंदे ने अपना सेल्फ ऑडिट किया होगा और ये कसम खाई होगी कि भगवान ये कोरोना खत्म हो जाए, आई विल मेक श्योर दैट कि हम सही ढंग से जिएंगे. एंड टॉकिंग टू यू द भजन, ये हर भजन में एक हमारी प्रोग्रेस हुई है. लाइक फर्स्ट इंटरव्यू आई रिमेम्बर वी sang दिस भजन, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया. एंड स्वामी sang the second bhajan with us. Hello. Yes, Navdeep, carry on. Yeah. The second bhajan was हमको तुमसे प्यार कितना. I remember Swami sang this bhajan with us. हमको तुमसे प्यार कितना साई तुम ही जानते. And every time when we used to go to Swami, we used to plan different bhajans. तो जलंधर में हम जब आपके पास आए थे, I think that time we sang this bhajan in front of Swami. चरणों में रख लो साई. You're talking about this bhajan, correct, Deepshika? यस भैया, चरणों में जगह मांगी थी, दिल में बसा लिया. All right. So हमको तुमसे प्यार के बाद जो हमने भजन स्वामी के आगे गाया था वो था चरणों में रख लो साई मनवा मेरा टूटे ना, तेरा सहारा छूटे ना भाई, तेरा सहारा छूटे ना. बट एज वी प्रोग्रेस्ड तो स्वामी का प्यार और मिलता रहा. तो उसके बाद ये गाना था चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया. So we can close eyes and I can sing it for you. चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया, चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया. थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया, आपका शुक्रिया
आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे भटके हुए हम राही, प्रभु तेरी शरण में आए। जन्मों के पुण्य फले हैं, साई प्रेम में तेरे समाए। पलकों से उठाकर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठाकर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू भैया, वेरी वेरी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो सारा सीन आके आंखों के आगे आ गया। कैसे वो पूरा ट्रेन में जाना, दिल्ली स्टेशन पे भजन करना बैठ के, ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स। स्वामी के उधर पुट्टपर्ती में इतना ब्लिसफुल दर्शन, ऑल सच। बिग थैंक्स आपका। I'll say that it is only God's will. बिना स्वामी के इच्छा के we cannot do anything. We यस speak, भैया। we think, we act only by His will. If people give us love, that is His will. If people cheat us, that is also His will. And in every act of life, it is a lesson. So the learning is we should never give up. And we should continue to be the best in every role that we play. And I'm thankful to you that you remember what I used to talk. Like, uh, in fact, Osho was with me last night when he gave me invite. On the LinkedIn, some big doctor had put passion before purpose. Osho, you remember? Yes, I remember that. So मैंने ओशो के सामने बात करते करते उस समय लिंक्डइन पे पोस्ट डाला that if your purpose is strong, the purpose itself will attract passion so that you meet your purpose. So purpose ignites passion. So whatever we do in life, we have to be number one. Now we are Sai devotees. So I remember what Swami used to say that when people meet you, मैं खरीदता हूँ मेरा हो गया। so when people meet you, they see Sai Baba through you. Because राम जी की जो वैल्यू है वो हनुमान जी से पता चलती है. So we have to make sure that whatever we do, it has to be simply the best. Because with us lies the responsibility of Sai Baba's name. So जो भी काम करो पूरी ईमानदारी से करो and make sure that your every talk, your every action, your every thought inspires people around you. And this is what my experience with Swami is. And I can be very honest that I have studied from Hindi medium, I have studied in Punjabi medium, and I have sold books door to door. मुझे एक किताब की बेचने पे 40 रुपए मिलते थे. I used to do data entry, जिसके मुझे 70 रुपए 8 घंटे के काम के मिलते थे. I used to wear pant and shirt of Rajeshwar Singh Amar Bhaiya. My group leader is here, who is like, he is the gifted father to us. We talk about Vasudeva Kutumbakam. All right. And let me tell you, I have experienced that as a Bombay youth.
ग्रुप में एक पंजाबी है, एक मलयाली है, एक आंध्रा का है, एक उड़ीसा का है, बट सारे मिलके रह रहे हैं. माई जॉब यूज टू कुक फूड फॉर ऑल ऑफ देम. अगर 40 बंदे, उनका खाना मैंने बनाना, क्योंकि मैं इनकी तरह सुंदर तरीके से गा नहीं सकता था. आई कैन नॉट प्ले इंस्ट्रूमेंट्स द वे दे यूज्ड टू प्ले. आई रिमेम्बर उस समय एक दिन के मैं 500 या 1000 रुपए खर्च कर देता था. 1996 1997 की बात मैं बता रहा हूं. बट द मनी यूज्ड टू कम. And from the money, where the money used to come, really do not know. Maninder Bhaiya is a witness if he's on the call. पूरा ट्रक भर के अनाज होता था. मेरा एक ब्रदर है जय दवे गुजरात से, वो और मैं ट्रक खाली करते थे. वो 100 किलो की बोरी हम कैसे दोनों भाई उठा के फेंक देते थे. That is a dream. Who used to give us power to lift that one bori of 100 of 1 quintal? Swami alone used to give us that strength. So with my folded hands, I will say, जब भी सेवा का मौका मिले, we have to enjoy that, because सेवा का मौका मिलना is God's grace. I used to always think कि जब मैं पैसे कमाऊंगा मैं बहुत सेवा करूंगा. Let me tell you, भगवान से तथास्तु बोलते हैं. भगवान ने हमें मौके दिए, हमने पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए, बट उस हिसाब से मैं ग्राम सेवा नहीं कर पाया. बट एंड आई यूज्ड टू मिस स्वामी अ लॉट. आश्रम से निकलने के बाद हमारी हालत ऐसी होगी जैसे एक पालतू कुत्ते को अगर रोड पे छोड़ दिया जाए, उसकी हालत क्या होती है. क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो जो बोला जाता है और जो संसार में होता है उसमें काफी फर्क आता है. देन what I could learn was Krishna lives in the world and Krishna is still out of world. So whatever we learned from Swami, we practice that. And let me tell you, I always had a regret कि मैंने MBA नहीं किया. But thanks to Swami, I reached at a quite decent level. I was the head of my company, and I can proudly say that MBA is reported to me. So probably I did not take the education from so-called institutes available, but Swami has been kind enough to give me what his child needs, and so is true for everyone. Now Deepshikha remembers what I told her 20 years back in a convention. Let me tell you, many times when I meet my old friends like Deepshikha or brothers and sisters like Deepshikha, they only make you remember what good you have spoken. So we have to be very careful that we leave a good memory with people, ताकि 20 साल के बाद जब हम मिलें तो हम सिर्फ उन अच्छी यादों को रिकॉल करें. 25-26 साल हो गए. हाँ जी, 25-26 साल हो गए. Yes भैया. So our group leader Rajeshwar Singh Amar is here. So Osho, you must invite him to speak his experiences. Our Uma Didi was a living miracle. उनके हार्ट में 3 छेद थे. बचपन से बाबा ने उनका ख्याल रखा. So I think you must invite Rajeshwar Singh Amar Bhaiya. He's full of Bhagwan's experiences. And the only message is, before I request Bhaiya to say a few words, that we are very lucky that we are part of Satya Sai organization. The good thing about Satya Sai organization is, or any Ramakrishna organization or any other organization is, all organizations teach us to think good, to speak good, to do good. Satya Sai organization talks about Manav Seva is Madhav Seva. And believe me, there is nothing that can happen without God's will. So you should not be worried. Have strong faith in Him.
God will come and protect you, and I'm living example of that. दीपशिखा, मैं ओशो को, मेरे पास आपका नंबर नहीं है, एंड माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मेरे पास आपके नंबर नहीं है. मैं ओशो को अभी अपने एक्सीडेंट की फोटोग्राफ्स भेजता हूँ. If I'm alive, it is only God's will. Yes, Bhaiya, Swami always with us and protect us all around us. Yeah. Swami to always says, "Why fear when I am here?" We Exactly. remember all that. Yeah. बहुत अच्छा लगा, इतना सब लाइव हो गया, सब लाइव हो गया. राजेश भैया से भी मिले थे हम उस ग्रुप मीटिंग में, मतलब पुट्टपर्ती में. उमा दीदी तो हमारे लिए एक आइडल आज भी है. उनकी अभी भी हमें एक एक बात याद है जो दीदी ने हमें सब समझाया था. हाउ टू बीइंग अ गुड, अच्छी बहू कैसे बनना है, अच्छी बेटी कैसे बनना है, स्वामी क्या एक्सपेक्ट करते हैं गर्ल से. ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड. उनकी बेटियों से मिलना पुट्टपर्ती में, मतलब पूरा एक एक चीज याद है. स्वामी के साथ उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करे थे. बहुत अच्छा लगा. वो शायद हमारे सब, मतलब जो भी हमारे ग्रुप में थे तब, हम पंजाब से यूथ गया था, सबकी लाइफ का एक यू टर्न था. हम सब ने एक यू टर्न लिया था. हम ऐसे, मतलब जैसे 10+1 ये एक ऐसा एज लेवल ग्रुप होता है, और उस टाइम में आपका पंजाब में आना, यूथ कन्वेंशंस करना, कॉलेजेस में जाके, सब आपका इंडियन कल्चर के ऊपर था, सारा नेशनैलिटी पे आपका यूथ था. बहुत ब्यूटीफुली प्रोग्राम था सारा, बहुत अच्छा. थैंक यू राजेश भैया, आपको भी मिले हम आपसे भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू नवदीप भैया. It was all God's this thing, His way of doing things. We were just instruments. In fact, now I sing one more bhajan, Deepshika and other Punjab devotees, which suits all of us. क्योंकि मेरे बॉम्बे यूथ के सारे जो भाई बहन हैं, ये बैंगलोर शिफ्ट हुए हैं काफी. कुछ लोग बॉम्बे में हैं, कुछ लोग यूएस में हैं, कुछ लोग यूके में. एंड आई मिस ऑल ऑफ देम, एंड आई मिस all the Punjab sisters and brothers also. So Ajnish ने ये गाना गाया है, and I can see Ramesh, my brother from Amritsar. तो the bhajan is, तेरा प्यार पाकर गमों को मिटाकर ये कहता दिल बार बार, जहां भी रहेंगे तुम्हारे रहेंगे, दिल खोल कर कहेंगे हम तुम्हारे हैं साईं. लाखों में तुम एक हो, हजारों में तुम एक हो, हर बहारों में तुम ही तो हो. फूलों में कलियों में तुम हो समाए, सपनों की गलियों में तुम हो समाए. जिधर भी देखा वहीं पर पाया, बस एक तेरा प्यार. तेरा प्यार पाकर गमों को मिटाकर ये कहता है दिल बार बार, जहां भी रहेंगे तुम्हारे रहेंगे, दिल खोल कर कहेंगे हम तुम्हारे हैं साईं. तुम्हें रात दिन साईं चाहेंगे हम, बदल दे मौसम में चाहेंगे हम, अगर जान दे हम तुम्हें प्राण दे हम, हो कुर्बान तुझ पे तो फिर भी है कम. तेरा प्यार पाकर गमों को मिटाकर ये कहता है दिल बार बार, जहां भी रहेंगे तुम्हारे रहेंगे, दिल खोल कर कहेंगे हम तुम्हारे हैं साईं. Sairam Bhaiya, बहुत blissful. and Yes, I thank you, am. Sairam. Thank you for such a beautiful talk, Very nice. and we are really touched. A mix of emotions we all had today, and I remember your photos which you have spoken about. I know that car was crushed between the two trucks, and the moment we all saw that pics, we were sure that nobody inside would have been alive because there was no car left. It was a tin box which was there.
So I'm very much aware that it was only and only because of Swami that today you are here alive among all of us. And we have already shot over time. And I would have request Rajesh Bhaiya to add something here, but I think so Swami wants that we have a very soon a proper session with him, and I'll surely connect with him and get a get his schedule and time when we'll be able to do it with Rajesh Bhaiya again. And with these words, thank you so much, Navdeep Bhaiya. You have frozen emotions among many people in Punjab and all over who are listening here. We can surely see that. And thank you for such a wonderful session. We'll close with Samast Loka Sukhino Bhavantu. Can I share one Yeah, three-line message what I gave to my wife when sure, I met that accident? sure. Sairam, sure, you can. See, the message which I gave to my wife at in the midnight, because एक ट्रक मेरी गाड़ी खींच रहा था, दूसरा ट्रक मुझे पीछे से ठोक रहा था, और जब दोनों ट्रक रुक गए, I called up my wife immediately, which was unusual for her कि मैंने रात को कॉल किया. I said, Divya, there's a good news. He said, क्या? मैंने कहा मैं जिंदा हूँ, I am alive, and I have called you when I'm actually alive. बोली क्या मजाक कर रहे हो? मैंने कहा yes, I am alive. I said there are 3 messages for you. She said what? I said you're not 100% owner of the property now. That's the bad news. The good news is I'm alive. And the third message, till the time I'm alive, compliment me. Do not complain, because we never know. There's no next moment. So the closing remark, जब आदमी मरने वाला होता है उसके दिल की बात निकलती है ना. So message is live your every second as last second, and do not complain, only compliment, and be the pure embodiment of love. Be a love bomb. Then I said, अब मैं ना, ये लोग मुझे कांच तोड़ के गाड़ी से बाहर निकालेंगे तो मैं तब बात करूंगा, फिर मैं तुम्हें जरा फोटोग्राफ भेजता हूँ. बोली अच्छा. And I have a habit of wearing suits. Ramesh and Osho knows it. So I told those people, भैया जरा आराम से निकालना है क्योंकि यही कपड़े बचे हैं और एक हफ्ते की टूर बाकी है. एंड ऊपर गाड़ी का सनरूफ था तो ऊपर से भी कांच गिरा हुआ था, तो उन्होंने कांच तोड़ के मुझे बाहर निकाला. तो ड्राइवर तो मेरा थर थर कांप रहा था, एंड ही वाज स्पीचलेस, और मैं मुस्कुरा रहा था. तो पुलिस वाला कहता है कि सर इस एक्सीडेंट में लोगों के होश उड़ जाते हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं कहा मेरे बाप ने मुझे जिंदा रखा है, आई नीड टू सेलिब्रेट. सो वहां पे बड़ी सी क्रेन आई, उन्होंने लाइट मारी, बोले अब क्या करना है? मैं कहा पहले तो मेरी फोटो खींचो, देखो जिंदा आदमी कैसा होता है. दे क्लिक्ड मी एंड दे सेड व्हाट शुड वी डू. आई सेड पास में अगर कहीं चाय मिलती है तो चाय पीते हैं क्योंकि मैं जिंदा हूं. एंड ट्रस्ट मी, उस समय मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम गाड़ी में जाते हैं और हमें कोई एक्सीडेंट दिखता है तो हम रुकते नहीं है. कैसे अनजान लोगों ने भगवान कृष्ण बन के, भगवान राम बन के मेरी जान बचाई. उस रोड पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी. सो लेट्स लिव अवर एवरी सेकेंड एज लास्ट सेकेंड. Everyone who helps you is nothing but that person is God himself. Now I proudly say हम सारे भगवान हैं. लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हिंदुओं में कितने भगवान हैं. भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर. तो कुत्ता भी भगवान है, गधा भी भगवान है, सुअर भी भगवान है, और हम भी भगवान हैं. ऐसा कोई नहीं है जो भगवान नहीं है. और यदि हम बीमारियों का इलाज चाहते हैं तो ये पंच तत्वों की पूर्ति कर लो, कोई बीमारी नहीं आएगी. सो इन आवर कल्चर, probably when we meet 101 Osho, I'll give you more, Deepshikha, Ramesh, I'll give you more practical examples जो मुझे लगते हैं which can be shared.
So like, let's respect each other, love each other, क्योंकि हम सारे भगवान हैं. दीपशिखा, अगर आपको मेरा वो भजन याद होगा जो हम सारे कहते थे, भगवान 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 आभिजा भगवान. You remember? Just भैया. भगवान. So like, हमने जो सीखा, earlier I used to talk with everyone. Now I talk with myself. And trust me, the only realization I have got is, चाहकर भी किसी का बुरा मत करो. Because the good you do comes back to you, the bad you do comes back to you. And be grateful to God for every breath we take. Every time we take water, we have to thank God. Every time we eat food, we have to thank God. क्योंकि रोटी, पानी सिर्फ और वायु सिर्फ उसकी वजह से हमें मिल रही है. So a lot can be done. We can do seva again, and probably me talking to all of you is only Swami's experience to me. Thank you. Jai Sai Ram. And Sai Dreams. May Bhagwan come in your dreams and bless all of you tonight. Sai Ram. Jai Sai Ram. जय साई जय राम बोलो भैया. भगवान जय श्री सत्य साई साई बाबा राम. जी की जय जय. जय. स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महे महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका